हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे। सो टुडे आई विल explain you the answer of these questions. The first question given to you in my last video lecture, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपको दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ moles of nitrogen in 44.8 liter of N2 गैस। यही वाला क्वेश्चन था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 44.8 लीटर ऑफ N2 गैस एट एसटीपी पर 44.8 लीटर ऑफ N2 गैस में मोल्स कितने होंगे। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। सो व्हाट इज द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस 44.8 लीटर एंड डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ। 22.4 लीटर एट एसटीपी under the standard condition of temperature and pressure। 22.4 liter of any gas contains 6.023 into 10 raised to power 23 number of gaseous molecule and this number is called Avogadro number। Avogadro theory के अंदर स्टडी किया है। So what will be the number of moles in 44.8 liter of N2 gas? 2 moles। So answer is 2। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका आंसर 2 है। फिर बच्चे एक और क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 44.8 liter of N2 gas at STP under the standard conditions of temperature and pressure at the STP under the standard conditions of temperature and pressure. What will be the number of molecules of nitrogen in 44.8 liter of N2 gas under the standard conditions of temperature and pressure? So what is the number of moles of nitrogen gas in 44.8 liter? 2 moles होता है and we know that since 1 mole is equal to 1 mole of any gas is equal to 1 mole of any gas is equal to होता है 22.4 लीटर is equal to होता है 6.023 into 10 raised to power 23 which is also represented by Na called Avogadro number। So since 1 mole of any gas is equal to 22.4 liter, hence क्या हो जाएगा, hence 2 mole of N2 gas is equal to, यदि 1 mole of N2 gas is equal to होता है 22.4 लीटर, कोई भी गैस का 1 mole STP पर 22.2 लीटर, then 2 mole of N2 gas is equal to हो जाएगा 44.8 लीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। So it will be equal to 2 into 6.023 into 10 raised to power 23 and it will be equal to 2Na। So answer is 2Na। जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उनमें आपका आंसर होगा 2Na। इट इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन in 44.8 liter of N2 gas at STP। number of atoms of nitrogen। so since one molecule of nitrogen gas, one molecule of nitrogen gas has N2 gas has 2 atoms
1 molecules of nitrogen gas has 2 atoms, hence 2 Na molecules of nitrogen gas will have, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, so we have 2 Na molecules, 2 into 6.023 into 10 raised to power 23 molecules in 2 moles, hence 44.8 liter of N2 gas is equal to 2 mole N2 gas, 2 mole N2 gas is equal to 2 Na molecules of nitrogen, and 1 molecule of nitrogen has 2 atoms, so it will be equal to 2 into 2, 4 Na, 4 into 6.023 into 10 raised to power 23, 4 Na atoms of nitrogen, because 1 molecule has 2 atoms, therefore 2 Na molecule will have 4 Na atoms of nitrogen, 4 Na atoms होंगे नाइट्रोजन के। क्या ये तीनों आंसर क्लियर हैं? सो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 2 मोल्स, जो भी ऑप्शन हो उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 2 Na, 2 into 6.023 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे 44.8 लीटर में, एंड 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस हैज 4 Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 4 Na एटम्स होंगे, 4 Na एटम्स मींस 4 into 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए? ध्यान से नोट करें आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इन योर कॉपीज प्रॉपर्ली। नोट करिए इधर फटाफट। ओके डन, सभी स्टूडेंट्स क्लियर हैं, इनको नोट कर लिया है सभी बच्चों ने? ओके, सो टुडे आई विल गिव you a flow chart to find number of moles of atom, number of moles of compound. With the help of number of moles of atom and compound, calculation of number of molecules present in compound, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे? So I will give you an important chart. In case of atom, यदि हम एटम की बात करते हैं, then mass of atom, listen carefully, mass of atom, if we divide mass of atom with its atomic mass, divide by atomic mass, divided by एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ, मैं एटम्स की जगह पर यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड बाय द प्योर सेम टाइप ऑफ एटम्स, सो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, number of moles of element, and if number of moles of element is multiplied by atomic mass, if number of moles of element is multiplied by, if it is multiplied by atomic mass, then it will give mass of element. इससे mass of element पता चल जाएगा। If we want to find the mass of element, if we want to find the number of atoms in given moles of element, then the given moles of element should be multiplied by Na. So if it is multiplied by, if number of moles of element is multiplied by Na, which is also the Avogadro number 6.023 into 10 raised to power 23, then it will give number of atoms,
and if we want to find number of moles with the help of number of atoms, then number of atoms should be divided by Na or Avogadro number. So it will give number of moles of element, and number of moles of element is multiplied by atomic mass, so it will give mass of element. इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान से अपनी कॉपीज के अंदर. ओके, नोट कर लिया है इसी को सभी बच्चों ने. Similarly, the same concept can also be applied for any compound. Suppose if we are given the mass of compound, compound is also a pure substance which is made by the same type of molecule. Mass of compound. So mass of compound, if it is divided by its molar mass, divided by molar mass, then it will give number of moles of compound. And if this number of moles of compound is multiplied by, if it is multiplied by molar mass of compound, number of moles of compound is multiplied by molar mass of compound, then it will give mass of compound. And suppose if you want to find number of molecules with the help of moles, then number of moles should be multiplied by Na or Avogadro number, which is also 6.023 into 10 raised to power 23. So it will give number of molecules in compound. And suppose if we are given number of molecules in compound, indefinite moles of compound, then with the help of number of molecules present in compound, we can also find number of moles of compound by dividing the number of moles of molecules with Avogadro number. So if number of molecule is divided by Na, it is divided by Na or Avogadro number 6.023 into 10 raised to power 23 divided by Na, then it will give number of moles of compound. बहुत ध्यान से नोट करना बच्चे लोग, ये फ्लो चार्ट बहुत काम में आने वाला है आप लोगों को. Suppose if we are given mass of element, then mass of element is divided by its atomic mass, so it will give number of moles of element. And if we are given number of moles of element and we are to find the mass of element, then number of moles of element multiplied by its atomic mass, so it will give mass of element. Suppose we are given number of moles of element and if we want to find number of atoms in number of moles of element, given number of moles of element, then number of moles of element multiplied by Avogadro number, so it will give number of atoms in particular element. And if we are given number of atoms and if we want to find number of moles of element, then number of atoms should be divided by Na to find number of moles of element. ये फ्लो चार्ट एलिमेंट्स एटम्स के लिए है. And both elements and compounds are the pure substance. An element is formed by the same type of atom. Similarly, a compound is formed by the same type of molecules. Compound pure substance है and element is also a pure substance. So suppose if we are given mass of compound, then mass of compound should be divided by its molar mass, so it will give number of moles of compound. And if we want to find mass of compound with the help of number of moles of compound, then number of moles of compound should be multiplied by its molar mass to find mass of compound. If we are given number of moles of compound and if we want to find number of molecules in compound,
then number of moles of compound should be multiplied by Avogadro number, so it will give number of molecules in compound. And if we are given number of molecules in any compound, and if we want to find its number of moles, then number of molecules should be divided by 6.023 into 10 to the power 33, so it will give number of moles of compound. यदि आप ये फ्लो चार्ट दिमाग में रखेंगे तो आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को और किसी भी तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए? सो नोट डाउन द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द आंसर